Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 22nd of November. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. This session will help all the aspirants who will be appearing for Civil Services examination, State Public Service Commission examination and one-day examination conducted by various agencies and the Government of India. Right? Those aspirant who are appearing for upcoming prelims examination in 2024 उनके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करें. I think most of you must be aware of the date that is there. It is already there in the academic calendar by the UPSC. 26th May 2024 को आपकी examination conduct होनी है और prelims के लिए it's a right time to prepare. You can shift your preparation from mains to prelims practicing a good number of MCQ questions. MCQs questions आपको हमारे बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड गेट द क्वालिटी क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यूज वी हैव अ डेडिकेटेड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दैट प्रोग्राम इज नेम्ड एज निश्चय specifically aimed to conquer the part of UPSC prelims 2024 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जहाँ पे 4900 के प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको discussions will be there the video discussion demo test and free magazines for content enrichment. If you're looking forward for more quality test, more conceptual clarity through your test, this is what you can look for. आप इसे बेसिकली रजिस्टर करने के लिए QR कोड यूज करें और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे वेबसाइट्स पे रेफर कर सकते हैं. Now let's get started with the news highlights of the day and discuss the news one by one. So the first news on the discussion is about the OECD report on climate finance. We'll see what are the important significant part that has been highlighted by OECD report. Second important news talks about the Sathi portal that ministry has actually launched and they have asked several states to come up to ensure that the promotion of Sathi portal is there at the best. The third important news talks about UGC that is coming with the updation part in the NET examination. This is something which was long sought from the students. The second last news talks about the part of the railway and even the railway station that has come up with the new part of the trains from the district where the President of India actually is native to, right? We'll conclude this session with editorial that talks about recognizing the impact of climate change on health, something very important. COP28 के बाद और 27 के बाद इनफैक्ट COP28 is scheduled for November. तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसकी डिस्कशन जरूरी है एंड यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्दो. Now let's get started with a detailed discussion of the news one by one. So first is about the OECD report on the climate finance. एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है OECD ने जो कि बेसिकली हाईलाइट करती है वेयर द क्लाइमेट फाइनेंस एंड क्लाइमेट मिटिगेशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट? तो क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात करें दिस हैज बीन इन द फोर फ्रंट फॉर मेनी कोप मीटिंग विच एक्चुअली टेक प्लेस, चाहे वो कोप 26 की बात हो, कोप 27 एंड इवन कोप 28 जो कि शेड्यूल है नवंबर में होनी बेसिकली दुबई में यूए. तो वहाँ पे भी क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जाएगी और ज्वाइंटली सारे डेवलप्ड कंट्रीज मिलके 100 बिलियन तक कंट्रीब्यूट करेंगे. दिस इज व्हाट इज ऑन द एजेंडा. So before I proceed further with the other details about the report that has been brought in by the OECD, आपके लिए जानना जरूरी है OECD है क्या, किस तरह से काम करती है and what is the OECD mandate. So OECD is actually organizations for economic cooperations and development. It aids the developing members outside the membership and promote reform. जहाँ पे 38 nations जो हैं जो contribute करते हैं from Europe, America and the Pacific region. Its members country formulate the economic and social policies. This can be on various dimensions. The members are the key partner in 80% of the world trade. So this is how the powerful body it is, and the report that has been brought in by the OECD will give some eye opener for the global leaders, for the developed countries and even for the developing countries. तो रिपोर्ट में क्या सिग्निफिकेंट बातें कही गई हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस OECD रिपोर्ट. सो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो क्लाइमेट फाइनेंस है, एज आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, क्लाइमेट फाइनेंस इज अगेन समथिंग दैट हैज बीन हाईलाइटेड और कोप 28 के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगी. दिस कैन बी स्टार ओपनर फॉर कोप 28 वेयर द क्लाइमेट फाइनेंस विच वाज एक्चुअली the part of Paris Climate Agreement 2015
उस समय से बात हो रही है क्लाइमेट फाइनेंस की। और कोप 27 में, इवन इफ यू रिमेंबर कोप 27, जहां पे लॉस एंड डैमेज फंड बनाई गई थी, विच इज समथिंग फीजिबली कमिंग आउट फ्रॉम द क्लाइमेट फाइनेंस। अगर क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो लॉस एंड डैमेज फंड एक ऐसी फंड है जो कि डेडिकेटेड है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के। और कोप 28 में, प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट द कोप 28 विच इज देयर इन यूएई, दुबई में होनी है, तो यहाँ पे बात की जाएगी कि किस तरह से क्लाइमेट फाइनेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। Now the report has come up with the details जहाँ पे स्पेसिफिकली बैकड्रॉप बताई गई है कोप 26 में जो ग्लासगो में हुई थी। उसके बाद जो डबल एडाप्टेशन फाइनेंस की बात की है, वी हैव नॉट एक्चुअली अचीव इट, एंड द पार्टीज टू यूएनएफसीसी, दैट इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे यूएनएफसीसी बोलते हैं, they said that with deep regret the country haven't yet met the target of 100 billion। जो 100 बिलियन डॉलर की टारगेट है, जो एक्चुअली सेट की गई है 100 बिलियन डॉलर की, वो टारगेट अभी तक मीट नहीं हुई है बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, बाय द कंसर्न हेड होल्डर, एंड दिस इज समथिंग विच इज एस्टॉनिशिंग एंड कंसर्निंग एट द ग्लोबल ऑर्डर। नाउ और क्या कंसर्न है, बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ एडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस इज द वन बिग कंसर्न। क्योंकि अगर मिटिगेशंस की बात करें, इफ यू लुक एट द पार्ट ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशंस, अगर क्लाइमेट मिटिगेशंस की बात हो तो सबसे पहले जो चीज़ें आती है, दैट इज अ पार्ट फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज टू incentivize reduce the trust among the world leaders and developed world as a serious track in the part of climate crisis. It is not only the protocol, it is not only the agreement that will work. We need to look into the practicality of that. Practically हमें देखना होगा कि whether feasibly that fund is coming or not. तो फंड की वजह से जो बड़ी इनिशिएटिव्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज की या डेवलप्ड कंट्रीज की, दैट इज बीइंग पुट इन होल्ड। स्पेसिफिकली जो इसका नुकसान है वो डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा है, बिकॉज दे हैव बीन ऑलवेज डिमांडिंग विद द पार्ट ऑफ फंड, क्लाइमेट फंड, जो उनको जरूरत है। नाउ वेगनेस है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के। एज आई टोल्ड यू, दिस डिबेट हैज कंटिन्यूड सिंस द पेरिस क्लाइमेट चेंज। अगर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करें, उस समय से ये कंटिन्यूड है, और स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी कि क्या क्लाइमेट फाइनेंस को किस तरह से फंडिंग दी जाएगी। सो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोप 27 जो इजिप्ट के शर्म अल शेख सिटी में हुई थी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके ने डिस्कस किया था इवन क्लाइमेट फाइनेंस की कोई डेफिनेशन, देयर इज no definitions to climate finance. You can see the seriousness of the global countries. अगर बात करें यूएस की या फिर यूरोपियन यूनियन की, ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाया क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के अभी भी कोई डेफिनेशन सेट नहीं है, राइट। कोप 26 क्लास को में यूएस लेट हैज एफर्ट वेयर दे हैव ब्लॉक्ड द डिबेट ऑन द कॉमन डेफिनेशंस alongside the Switzerland, Sweden, and some other developed countries. They also have not come up with the proactive measures where the definitions, the standards, the SOPs need to be set upon in terms of the climate finance. Now, how much finance is required? As I have told you at the beginning, $100 billion की target की बात की है. This is what the target actually is. And this lack the foundation in assessment. जो actual investment आनी है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे, बिकॉज दीज आर द कंट्री दैट आर एक्चुअल सफरर। तो ये सफरर कंट्रीज हैं, द पार्ट ऑफ द इमिशंस, द कार्बन इमिशंस विच इज देयर, राइट, या फिर ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड या CO इमिशंस की बात करें जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने की हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए ये फंड की जरूरत पड़ी। The OECD report has also highlighted by 2025 developed countries are estimated that they require around 1 trillion. अभी तो 100 बिलियन की बात की है, आगे 1 ट्रिलियन की जरूरत पड़ सकती है, एंड रफली बाय 2030 वी कैन रिक्वायर 2.4 ट्रिलियन, जो कि आप अभी इंडिया की इकोनॉमी है, जितनी इकोनॉमी है उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ हमें क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। इंडिया इज टारगेटिंग टू बी a $5 trillion इकोनॉमी, दैट विल टेक टाइम ड्यू टू COVID-19. The shortfall of the economic performance has resulted in the detrimental effect of the growth. तो आने वाले समय में इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, बट आज जितनी इंडिया की इकोनॉमी है लगभग उसी के आसपास जरूरत पड़ेगी हमें क्लाइमेट फाइनेंस का। दिस इज टू मेक यू रिमेंबर, आपको ऐसी चीजें याद रहेंगी। मेक श्योर आप जब मेंस एग्जामिनेशन में लिखे, आप इस तरह के फैक्ट्स जरूर वहां पे कोट करें। 100 बिलियन गोल पार्टनर इज कंपैरिजन समथिंग दैट नीड टू बी मेट, और OECD ने अपने रिपोर्ट में बताया है दैट डी रिस्किंग द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और जो मल्टी डेवलपमेंट बैंक है MDB, दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इनहेविटेबल है, इनके बिना बेसिकली जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो भी पाने में मुश्किल हो सकती है। Now moving ahead, states to encourage the use of Sathi portal. This is specifically which has been brought in by the Ministry of Education, जिसे पहले
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी कहते थे, नाउ दिस हैज बीन नेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इनकरेज करी है एक पोर्टल को जिसका नाम है साथी, दैट स्टैंड फॉर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। किस किस एग्जामिनेशन की? दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्जामिनेशन। अगर वन डे एग्जाम्स की बात करें, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है साथी पोर्टल। इट इज बेसिकली टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नीट के एग्जाम जो मेडिकल के लिए होती है उनके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, बेसिकली प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मटेरियल्स टू द एस्पिरेंट्स, राइट? Now, what is Sathi portal? I've give you the brief. Now, we'll look into the other details. That is the initiative by the Ministry of Education. Basically, ये जितनी भी materials इसमें available कराई जाएंगी, that will be in English, Hindi and other regional language. Why in other regional language? If you look at the policies of New Education Policy 2020, that call for more linguistic approach. ज़्यादा से ज़्यादा language. Even medical science in many colleges in India have started teaching in Hindi curriculum. तो उसको प्रमोट करने के लिए जेई जैसे एग्जाम्स में, इवन फॉर नीट एग्जाम्स, राइट, विच इज स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल एंट्रेंस, तो उनमें हेल्प करने के लिए बच्चों को ये दी जाएगी. द ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म विल बी एक्चुअली इन असिस्टेंस विद IIT कानपुर. This is again important. This can be again relevant for prelims as well. And this has been launched with 45-day crash courses that aspirant can prepare for the upcoming JEE exams, right? JEE और NEET दोनों के preparations के लिए. Nearly 5,000 students have registered on the platform so far, and Sathi Hostel lacks a video content prepared by professors of IITs and All India Institute of Medical Sciences, that is AIMS. तो NEET के लिए जिनको प्रिपेयर करना है उनको AIMS के प्रोफेसर असिस्ट करेंगे. स्टूडेंट जो प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE examination, which is a JEE joint entrance examination, the fraternity of the community, that is the professors community from IIT, will be actually making their substantial contributions. Now, Sathi portal की features क्या क्या होंगी, how it will work. So first, it will provide for the preparation material, that will be PDF, other source of questions bank, and the real-time test will be there for NEET and JEE examination. Video solutions provide की जाएंगी along with the regional languages for entrance examination. JEE NEET examination preparation is like idea webinars होंगी. Student stories for struggle and achievement, so like the success stories will also be shared to give a motivation level to the aspirant who is actually preparing. Solve the sessions, solve with me session will be there with the faculties, and motivational sessions to make student the mental condition, the mental state at the right time, right? Now, moving ahead with other news, UGC set revise NEET syllabus. This is something which was long demanded by the student fraternity. तो चेयरमैन ऑफ यूजीसी, दैट इज समथिंग दैट हैव कम अप विद द चेंजेस, राइट. उन्होंने कहा है कि जो नीट के एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन है, उसके सिलेबस को चेंज किया जाएगा और एक्सपर्ट पैनल बनाई गई है. आफ्टर द रिकमेंडेशन द चेंजेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस. नाउ नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है यूजीसी की? 83 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे UGC actually exam लेती है twice a year. This is twice a year which is conducted by UGC. The first is conducted in the month of June and other is conducted in the month of December, right? And UGC chairman has said that the commission has initiated the process to update the syllabi of the examination since 2017 onwards. और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 NEP, अब दिस इज अ गाइडिंग फैक्टर जहाँ पे जिस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस की जा रही है और इसी प्रपोज चेंजेस के हिसाब से मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम बनाई जाएगी और हॉलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच रखा जाएगा. द कमीशंस विल फॉर्म एन एक्सपर्ट कमिटी जो कि अंडरटेक करेगी सारे एक्सरसाइजेस को. उनके रिकमेंडेशंस के बाद ही UGC फाइनली डिसाइड करेगी दैट व्हाट विल बी द न्यू सिलेबस. और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है अपार्ट फ्रॉम द नीट एंड JEE एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी बाय द UGC नेट एग्जाम. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस विल वर्क फॉर अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन. नाउ UGC के बारे में थोड़ा ब्रीफ मैं आपको बता दूं. इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which is responsible for coordinations, determinations and maintenance of the standard of teaching, examinations and research इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन. जितनी भी हायर एजुकेशंस हैं आफ्टर 12th जो कॉलेजेस हैं, सारी चीज़ों की रेगुलेशंस UGC के थ्रू की जाती है. कमिंग टू एग्जिस्टेंस इन 1953. Various the overseas universities, colleges disperse their funds, formulate policies to enhance the quality of education in the country. ये सारी डोमेन जो है that is a mandate of the UGC.
Many a times a question is directly framed upon the UGC as well. तो आपसे आपके लिए जो contents हैं that will be relevant. Now, the first ever train that service which has started from the Badam Pahar. This is a place where the president of India, the current president of India, Draupadi Murmu, is actually native to. तो वहाँ पे development की गई है, railways लाई गई है, and this railway has been brought in after 112 years. Now, on a prima facie, it is very something important news. और ये मैप वर्क के लिए भी रेलेवेंट होगी और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है. बट द डाउन साइड ऑफ दिस न्यूज़ इज दैट आई पर्सनली फील हमें इतना टाइम लग गया इस जगह को रिकॉग्नाइज करने के लिए. नो टू द फैक्ट अगर राष्ट्रपति यहाँ से नहीं होती, इफ द प्रेसिडेंट नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, सो विल द डेवलपमेंट टेक प्लेस सो अर्ली? वाई वी आर रिकॉग्नाइजिंग अ प्लेस विच हैज नॉट बीन नोन टू द पीपल एंड स्पेसिफिकली making them recognized because president belong to that region. So I mean, these things should be avoided. The government of the day, the state government, this is not only the duty of the union government of the day, but state government को भी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, प्रपोजल रखने की ज़रूरत है ताकि सारे जगह के डेवलपमेंट होलिस्टिक हो. द होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट इज इक्विटेबल एंड यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, right? So these were my some personal note that I wanted to add on this. Now coming to the news, that Badam Pahar is an area, right, where जहाँ पे ये नई ट्रेन्स आई. Now, during the Odisha visit, President Draupadi Murmu has actually flagged the trains. जो 3 ट्रेन उन्होंने स्टार्ट की है, that is flagged off was Shalimar Badam Pahar Weekly Express. Other is the Badam Pahar Rourkela Weekly Express and Tata Nagar, which is also known as Jamshedpur, which is in Jharkhand, right? Badam Pahar MEU, जो कि MU ट्रेन और EMU 2 ट्रेन होती है, मेन लाइन ट्रेन और EMU ट्रेन्स, वो एक्चुअल में ये तीनों ट्रेन को स्टार्ट की गई है. ऑन द ओकेजन्स द गैदरिंग, द प्रेसिडेंट हैज सेड कि डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्टिविटी डिफाइन करती है कि उस एरिया की डेवलपमेंट कैसी है, राइट? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल स्टडीज पेपर 3 एज वेल. आप ये पॉइंट हाईलाइट भी कर सकते हैं. बाय इट्स रोड, रेलवेज एंड पोस्टल सर्विसेज, ये एक इंसान के लाइफ को, उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस को, वहाँ रहने वाले लोगों की जो जीवन है उनको आसान बना. Now, redevelopment of the station, that is also taking place. President ने कहा that foundation and of the redevelopment of the station will also take place under the initiative which is there by the government of India, which is known as Amrit Bharat Station Scheme, right? This is again something very important that call for the redevelopment of the rail transport infrastructure and ultimately call to boost the tourism in the region. And the President of India has also urged the tribal youth to take advantage of government scheme and stressed on efforts for necessary development of the region, right? तो ये ज़रूरी है कि holistic development हो, the interiors of the India should be identified and actually should be put in the forefront. ऐसा नहीं है government नहीं कर रही है, government is doing their best, but we need to catalyze the part of things that is there in the pace और उसे हमें और ज़्यादा strengthen करने की ज़रूरत है. The management from the bottom, from the district level need to be actively working so that the result is there within the time frame. Now, moving ahead with the editorial for the day, that is recognizing the impact of climate change on health, something very important. Climate change की बात मैंने आपके साथ स्टार्टिंग के फर्स्ट थीम आर्टिकल में भी की है और ये जो एडिटोरियल है वो भी क्लाइमेट चेंज पे ही फोकस है. विल सी द डिटेल टू दैट. So what I'll be discussing, first I'll give you the background of theme, the title that is there. डबल बर्डन क्या है इंडिया के साथ, क्या और दूसरे कंसर्न है और क्या एक्शंस लेने की जरूरत है. दिस विल बी द कंक्लूजन पार्ट दैट विल बी कंक्लूडिंग. So 28th conference of parties that I've told you, which is scheduled to be taking place in UAE, like United Arab Emirates. दुबई में होनी है ये, right? दुबई is a place where this will help. तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें की जाएंगी एंड दे ऑलरेडी द फोरफ्रंट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात नहीं होती है तो जो वनरेबिलिटी इंडिया एक्चुअली फेस कर रही है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के, उसके रिपरकशंस हेल्थ सिस्टम में दिखेंगे और बाद में ये रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ेगी विद टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड मोर्टालिटी. We have seen that the 2% of the global temperature risk has already rendered and make the world and even India inhabitable for some places, specifically as of now. 21st century 2023 में बात करें, कई ऐसे रीजन हैं जो हेल्थ के डेक्रीमेंटल इफेक्ट से, जो क्लाइमेट के डेक्रीमेंटल इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. The Paris Climate Agreement have supported that we need to limit the temperature by 1.5 degrees Celsius, which is not the case. मैंने आपके साथ कल भी न्यूज़ डिस्कस किया था क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के, किस तरह से टेम्परेचर राइज हो रही है उसको लेकर के. तो मेक श्योर यू चेक दिस. यहाँ पे 2.3 डिग्री के सेल्सियस भी रिपोर्ट की जाने वाली है बाय 2030. वी नीड टू कंट्रोल इट एट द प्रायोरिटी एट द अर्लीस्ट.
However, at 2023, world experiences highest at the temperature, and even recording with the part of food security, livelihood options, accelerating the part of health challenges, ये सारी फोर फ्रंट पे हमें नेगेटिव चीज़ें को देखने को मिल सकती है. Now, double burden होगी इंडिया के लिए. किस तरह से डबल बर्डन? Why we are calling it a double burden? Because India is witnessing the health burden of the communicable and non-communicable diseases. उसके साथ साथ अगर बात करें जो vector borne diseases हैं, like malaria, which is there by mosquitoes, sandflies, ticks, they're potentially one that is going to increase. The introductions of vectors and pathogens are the new, which will again emerge in the states like Himalayan states, and this is becoming a concern. Epidemics that is linked to flood, rising of the prolonged warm periods, the fostering of weather, flood, the food-borne pathogens and disease will also be enhanced at the level जहाँ पे problems और ज़्यादा बढ़ सकती हैं. Now, कुछ और concerns की बात करें, there's a disease called chronic obstruction pulmonary disease (COPD). इसकी भी एक्सक्लेब्रेशन देखी गई and the increase extent for the episode which also there with the increase and surge in the air pollutions because of the particulate matter 2.4 specifically. और भी बहुत सारे ऐसे एयर पोल्यूशंस हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी. Diminishing food and water availability has been coupled with the reduced nutritional value, highlighting the susceptibility of the diseases. उसके साथ साथ जो pulmonary disease हैं उसके numbers भी बढ़े हैं, hospitalizations भी बढ़ी हैं, and even 1% increase in the temperature has even above 29 degrees Celsius. The India urbanization at the rapid pace is in unplanned manner. Why in unplanned manner? If you see metropolitan cities की अगर बात करें जो डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस पे, देयर इज नो वे आउट जहाँ पे फिजिबिलिटी, ग्रीनरी, वेंटिलेशंस की बात की गई है. सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बने जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है जो कि पूरी तरह से अनप्लान्ड स्ट्रक्चर्स पे बन रही है. Now, actions that is required. So, actions at the control level is needed at the global region, at the regional level. To achieve this, India has to recognize the climate finance and something we need to take into considerations. We need to address it at the right time, at the right place. National level के साथ साथ, even from the national level, state level, and at the district level, we need to ensure that the things are put in place. और जो research activities हैं, जो बड़े reports हैं, जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, जो एक्चुअली गुड प्रैक्टिसेस है, उसे हमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है. द कंटिन्यूड अनबेटेड क्लाइमेट चेंज विल हैव पोटेंशियल एक्सक्लूब्रेशंस ऑफ ड्यूअल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज हेल्थ, जहाँ पे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जैसे डिजीजेस बढ़ेंगी और जो हेल्थ कंसर्न है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हेल्थ केयर को लेकर के वो भी ज़्यादा देखी जा सकती है. सो दीज आर द कंसर्न दैट वी डेफिनेटली नीड टू लुक अपॉन एंड कंट्री the governance of the day need to this take into considerations. Now answers that discussion for yesterday questions. जो कल के सवाल हैं उसके जो पहले सवाल है उसका करेक्ट ऑप्शंस बी है. इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में मैंने आपसे पूछा था, इसके पहले स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. Now for second question, the correct option is C. मैंने आपसे बोंगो सागर के बारे में पूछा था, नदन बंगाल. इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. यू कैन रीड आउट द स्टेटमेंट, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड चेक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. Today's MCQ for practice. For the first question is about the PVTG community. ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने झारखंड में एक्चुअली 15 नवंबर को ही एक बहुत 4500 या 45,000 करोड़ रुपीस का, एक्चुअली आई एम नॉट, यू नीड टू चेक द फंड, राइट, दे नॉट कंसर्न अबाउट द फंड. तो बेसिकली स्कीम रिलीज किया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट, इसलिए जानना. PVGT is an Indian state that for the union territories, right? The Madhya Pradesh has been highest density of the PVGT community in India. So accordingly, what you have to do, you have to participate in the question answer series. अब अपने correct option A, B, C या फिर D में हमें comment section में ज़रूर बताएं, right? Read out the statement one by one, pause this video, read it slowly, then answer the questions. Second question of the day is about the consider the following statement with regards to Vizhinjam International Seaport. It is an intended container transmitted with a multi-purpose bulk freight. It is built with the land model which incubates public-private partnership. आपको देखना है करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं और अपने करेक्ट ऑप्शंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. This was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, admissions and programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Stay connected. We'll come up with the more informative videos. Thank you.